Hi and welcome to yet another episode of ChaiPeCrypto, and today we're going to focus on a very deep topic. The topic is being anonymous. Anonymity, or in other words, the state of being anonymous. Everyone wants it, no one's got it. So आज हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपनी privacy online को we are letting go of that, and we're also helping other companies and brands to make use of it knowingly or unknowingly, and then use it for their own advantage. तो क्या आपको लगता है कि आप कितने anonymous हैं अभी, कितने private हैं? And when I talk about anonymity, it doesn't mean the state of being nameless. Nameless होने की बात नहीं कर रहे हम. It is about how private you are in your online, surfing the internet or using any kind of online experience, or even about how untrackable or unreachable that you are. So that's what anonymity is. But like I said, as soon as you go online, and the first thing probably most of you do is कि आप Google पे जाते हैं. सबसे पहले आप Google पे जाते हैं and Google पे कुछ search term लिखते हैं. Starting off with that, you start losing your privacy. As soon as you start doing some things online, you start losing privacy already. आपकी anonymity जो आप मेंटेन करना चाहते थे, जो privacy मेंटेन करना चाहते थे, प्राइवेट रहना चाहते थे, बट जैसे ही आप कोई सर्च करने गए गूगल पे, you have already started to let go of your anonymity. So like in your house, you can't stay as private as you can because your mom knocks at the door. Same way, Google and other companies are knocking at your door all the time with you knowing it or unknowing it. But let's see what really companies do and what all companies take what all kind of data while we are surfing online. जब हम privately सोचते हैं कि हम लोग privately browse कर रहे हैं, तो पीछे से what kind of data do we really let go, and कौन सी companies हैं जो इन data को, इस data की वजह से अपने आप को further enhance या grow कर पा रही हैं. And like people say, when you know that this product is for free, then most of the times you are the product. So let's find out कि हम कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, and why should we not be saying yes to this, and why we should be protecting ourselves online, protecting our privacy online, and really being anonymous. Data तो बहुत सारी कंपनीज कलेक्ट करती हैं, but obviously the number one prize goes to Google. आपका डेटा सबसे ज़्यादा गूगल पे जाता है because let's just go and take a look. You start using your mail service through a service called Gmail. You start looking for going to a destination when you start using maps to complete that journey or that destination. From these small points, Google starts tracking and collecting your data, and they have a lot of all of that data that they're collecting is abstracted. So आपकी definitely they're not coming and tracking you directly or by name, but they're tracking you by something known as an identifier. हर एक project as a Google, Facebook, and all of them, they give you an ID, and it actually becomes your identifier. आप Gmail पे जाते हो, you use the same ID. आप Google Maps पे किसी के घर जाते हो, you have the same ID, and more or less, obviously, you are fully in consent. आप consentfully उनको अपनी ID को track करने देते हो जो आपने उनके systems पे ही बनाई हैं. So they're not to blame with that. But how can you still keep yourself more private when companies like Google are always there to track you? But why are they tracking you? वो आपको ट्रैक क्यों कर रहे हैं? आपके जितने भी एब्स्ट्रैक्टेड डेटा है आईडी से, कि आप कहाँ गए, आपने क्या किया, आप और भी बहुत सारी चीज़ें. That gets back to Google's cloud storage, Google's databases, where machine learning algorithms और आपको AI, जैसे आप सुन रहे हैं AI and machine learning, all this big data science that we are all hearing about, not from now but from ages ago, 10 years, have been there so that आपकी ID, abstracted ID से meaningful relational data बनाया जाए, ये समझने के लिए कि क्या आप अभी जहाँ जा रहे हो, शायद वो आपका घर है, जहाँ आप कभी जा रहे हो ये आपके बहुत ही अच्छे दोस्त का घर है, and so on and so forth. And all of this, again I'm saying कि आपको लग रहा है कि वो एक छोटे से पीस ऑफ डेटा से मेरा क्या हो जाएगा, बट वो एक छोटा सा पीस ऑफ डेटा नहीं है, वो डेटा किसी और सेगमेंट से कनेक्टेड है, एंड पीछे आप समझो कि गूगल के पास आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री है. तो हाउ दे मेक गुड रिलेशन फ्रॉम इट, it doesn't, you don't know and I don't know and I can't help you with that. But
let's also find out what kind of information do they really keep, because when you are going and signing up for this service, जैसे कि आप बैंक अकाउंट खोलने आते हैं तो आपको बैंक एक 20 पेज का डॉक्यूमेंट दे देती है जो आप कभी नहीं पढ़ते. सेम वे गूगल पे जब आप अकाउंट खोलने जाते हो तो वो भी एक लंबा चौड़ा आपको टर्म्स एंड कंडीशंस दे देती है, privacy policies दे देती हैं जो आप शायद कभी नहीं पढ़ते. बट अगर आप पढ़ोगे, so they have completely taken your consent to do this, what they are doing, and also not just saving your data into their databases, but also कि वो share कर पाते हैं आपका data to third party services and various other services, जैसे भी उनको ठीक लगे, as and when they deem it to be fit to use. And उसके बाद भी अगर आप सोचेंगे कि क्या मेरा सारा डेटा चला गया, क्या मेरा ईमेल चला गया और बहुत सारी और भी चीज़ें जो हैं आपने जो करी होंगी ऑनलाइन, तो इतना मत घबराइए. देयर आर वी आर शेयरिंग अ लिंक, इट इज़ जस्ट राइट हियर, एंड यू कैन गो ऑन टू दिस वेबसाइट एंड यू कैन फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज टेकन, क्या डेटा आप विलफुली आप गूगल को और भी बहुत सारी कंपनीज को दे सकते हो. तो आई एम शेयरिंग दिस लिंक, यू कैन गो ऑन टू दिस लिंक and you can find out more about how Google uses your data and how you can be keeping yourself more private. and आप ये भी देख लीजिए कि कौन सा डेटा पहले से शेयर हो रहा है, जैसे कि आपका ईमेल आईडी बट या यूज़र नेम, बट बहुत सारा डेटा आपका शेयर नहीं भी हो रहा है, जैसे कि आपका कोई आइडेंटिटी नंबर या इफ़ यू आर इन यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर and credit card information, all of that. So a lot of things Google takes permission from you कि हम ये चीज़ें collect कर रहे हैं आपसे और ये चीज़ें हम नहीं collect कर रहे. So you can read all about that, but the point is that they have taken complete consent from you when you signed up with them, and now they can actually make use of your data any way that they want for it to be used, and you can't really say anything about it. If you want, you can obviously delete your account, but that's as far as it goes. So let's go in a little deeper. Why are we giving out this data? Obviously you will say, अगर मैं अपना data provide नहीं करूँगा तो how will I get the services of Google? Great, I totally agree with you. If we don't give the data to Google, then how will Google help us in, let's say, navigating from our place to our friend's place, or even checking on emails? बट व्हाट इफ आई टेल यू कि आपकी ईमेल तक गूगल के पास राइट है पढ़ने की, आपकी ईमेल का डेटा गूगल के पास राइट है पढ़ने का, एंड जो भी रिसीव और सेंड करते हो आप ईमेल्स, जो ड्राफ्ट में भी सेव करते हो, एंड एवरीथिंग, एंड इवन द इमेजेस दैट गो विद इट, बट दे आर नॉट, they cannot collect the data of the metadata of that email. So they can collect certain things and they cannot collect certain certain segments of data. Again, उस लिंक में काफ़ी कुछ आपको पता चल जाएगा. बट नाउ कमिंग टू थिंक अबाउट इट, आप जितना डेटा उनके साथ शेयर कर रहे हो वो आपको सर्विसेज में तो डील करते ही हैं, बट लाइक आई सेड, दे आर फ्री टू यूज योर डेटा टू नॉट जस्ट फॉर देमसेल्व्स बट ऑल्सो फॉर थर्ड पार्टी शेयरिंग सर्विसेज. नाउ व्हाट आई मीन बाय थर्ड पार्टी शेयरिंग सर्विसेज इज दैट इफ आई नो व्हाट यू डू एंड हाउ यू डू इट, क्या करते हो, कब क्या करते हो, कब आप ऑफिस से घर जाते हो, घर से ऑफिस जाते हो, बहुत सारी चीज़ें. I don't want to scare you, but at the same time, I am free to share. आप जब गाड़ी में हो कि मैं किस थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को बताऊं, and then उनकी ad आपको आए. And you know what? This is how Google makes money. 75% of Google's income comes from ads revenue, exactly like I described you to right now. So it's nothing to get really fancy, और क्या बोलते हैं कि ये तो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है. It's not about that. It's already happening and it always happened like this. It just grew. अभी हम बहुत ज़्यादा ये बढ़ रहा है और आप अपने डेटा पे उतना ज़्यादा कंट्रोल, डिजिटल फुटप्रिंट पे उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे. And I would really request everyone, obviously I'm not saying don't stop using Google and stop using Facebook and stuff like that, but there are ways that we can definitely make sure that we are keeping secured and keeping private, because you don't want कि Google को जो चीज़ें पता है वो आपके अगर आप किसी और एप्लीकेशन में जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल Amazon या इवन eBay, then वो चीज़ उनको उन तक पहुँचे. बट इट्स जस्ट अबाउट थर्ड पार्टी शेयरिंग सर्विसेज. बट आई विल ऑल्सो गिव यू सम, अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर अगर आप एक कॉलेज में स्टूडेंट हैं एंड यूर यूजिंग गूगल क्लाउड सर्विसेज, देन प्लीज़ 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 इनकॉग्निटो करना मत भूलिएगा, बिकॉज आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स आपका पूरा डेटा चेक कर सकते हैं और जो भी आप कर रहे हैं वो भी चेक कर सकते हैं. सो प्लीज़ कीप प्राइवेट, एंड नॉट जस्ट बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट और एन एम्प्लॉई, बट आई थिंक इन लाइफ यू शुड नाउ स्टार्ट बीइंग मोर प्राइवेट.
and if you are not, then you are a product on the internet. So basically it's not just Google, it's about all the places that you went online, gave some pieces of data. Obviously Google is like, in this category it's called grade F, मतलब they failed miserably. But ऐसा नहीं है, you also use Facebook, you also use Facebook to interacting with your friends, sending them messages, posting like new pictures, and you also go to Amazon, select the best things that you would want and you want to buy. But all of these are actually making you sign a consent where any kind of information that they would collect from you to increase and improve your experience, obviously, वो उन डेटा को यूज कर सकते हैं in one straightforward way. If you want to ask, are these companies selling your data? How valuable is it? कितना valuable है आपका डेटा? So in one straightforward answer, yes, all of these companies are selling your data. How much of it? When? I don't know. But yes, they are selling your data, and it's high time for us to really protect that data for you. Now obviously, like we'll tell you the steps that you can actually go with to maintain better anonymity, better privacy in usual circumstances. जो आप नहीं कर रहे होंगे शायद वो better हो जाए उन 8 points जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे. But even before that, you need to really understand कि आप willfully उनको ये डेटा दे रहे हो. बट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये डेटा सिर्फ आपके कंप्यूटर से नहीं दिया जा रहा. जब आप एक आईडी से कहीं पे भी लॉगिन करते हैं, उसके बाद आप चाहे किसी भी दोस्त के घर जाएं और वहां उस दोस्त के घर से आप अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करें, दैट इज ऑल्सो कैप्चर्ड. एवरीथिंग इज कैप्चर्ड, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. आप ये मत सोचिए कि आप इन डेटा पैकेट्स को या डेटा जो भी आप लॉगिन कर रहे हो कहीं पे जाके या कुछ भी कर रहे हो, ये बिट्स एंड पीसेस में लिया जा रहा है. बिट्स एंड पीसेस में लिया जरूर जा रहा है, बट एनालाइज बिट्स एंड पीसेस में नहीं किया जा रहा. यू मेक श्योर दैट यू ऑलवेज रिमूव कुकीज से वो डेटा हर जगह जहां पे भी उनको वो रिलेशन दिखाना है, जहां पे भी, दिस इज होल साइंस. बिग डेटा इज अ साइंस. So it is a job for data scientists and all these economists and math experts to really find which data and predict also, and which data कि ये जो data आया ये भी actually map हो गया आपके proper data set में जा रहा है. So ultimately if you want to, I'm not saying you have to fight Facebook or you have to fight Amazon or you have to fight Google. जो आप वहाँ पे कर रहे हो वो तो आपने कर ही दिया, but आगे क्या करोगे और बहुत सारी और चीज़ें जो आप कर रहे हो वो आपको कैसे बचानी है, कैसे how to keep them in order, that's very important. And that is what we gonna really, in the 8 steps that I'm talking about, in the 7-8 steps that I'm talking about, what can you do to really be more private and not lose data? Because I'm talking about you going and crossing that DND flyway, and if you are using a phone, there are sensors everywhere. So Wi-Fi, Bluetooth, any other sensor, जो भी sensor आपको समझ आ रहा है, I'm not talking about a case कि बिग ब्रदर या बिग बॉस चल रहा है, नहीं, बट असली में कुछ ना कुछ वैसा चल रहा है. और अगर वैसा चल रहा है तो आप अपने आप को, अपने घर वालों को या जो भी वहाँ पे है जिनको सिक्योर रखना है, हाउ कैन यू मेक देम सिक्योर? बिकॉज अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो भी कहते हैं कि हम आपका डेटा सिक्योर रख रहे हैं अपने सर्वर पे, पर वो डेटा सिर्फ उनके सर्वर पे नहीं होता, वो कहीं किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू पैकेट में जाता भी है इंटरनेट से, या फिर वो एक वाईफाई और ब्लूटूथ के डिवाइसेस के बीच में जो डेटा पैकेट्स मूव कर रहे होते हैं. हर चीज़ को प्रोटेक्ट करके नहीं रखा जा सकता. और अगर कोई बैड इंटेंट से या मैलिशियस इंटेंट से आपको फॉलो कर रहा है या ट्रैक करना चाह रहा है, उसके लिए तो पूरी की पूरी खुली फील्ड है आपको ट्रैक करने की और आपका फ़ायदा उठाने की. और देखते हैं कि कितने ज़्यादा हैक्स होते हैं, साइबर सिक्योरिटी में कितनी प्रॉब्लम्स है. पर्सनल क्रिप्टो सिक्योरिटी, क्रिप्टो इन दिस सेंस इज क्रिप्टोग्राफी नॉट क्रिप्टो करेंसी, बट पर्सनल क्रिप्टो सिक्योरिटी में कितनी प्रॉब्लम्स है. एंड दैट्स व्हाई मतलब आई वांट टू स्ट्रेस ऑन दिस टॉपिक ऑफ एनोनिमिटी आज, क्योंकि अगर हम यही नहीं समझते कि हमें कितना प्राइवेट या एनोनिमस होना है, तो हम अपने पैसों को प्राइवेट कैसे रखेंगे? आज की टाइम में जैसे ऑयल था, आज की टाइम में डेटा ऑयल है, आप ऑयल है, आप ही का डेटा बार बार यूज होके सारे लोग
सारी बड़ी कंपनियां बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हो चुकी हैं, एंड ऑब्वियसली इट डजंट कम बैक टू यू. आपको अपनी सर्विसेज मिल रही है ना, आपको होगा कि मेरे को मेरी सर्विसेज मिल रही हैं, मैं आई एम फाइन. बट आर यू रियली फाइन? आर यू रियली ओके विद दिस आइडिया कि मेरे जितना भी डेटा है उसको जाने दिया जाए? और यू नो, जिस दिन आप सोचोगे कि ये आपके साथ नहीं, आपके आगे आपके बच्चों के साथ हो सकता है, आपके यू नो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स के साथ हो सकता है, एंड टिल नाउ वी आर लाइक ऑन द एज कि ये सही है या नहीं है. सो वी हैव टू कम टू अ कंक्लूजन, वी हैव टू कम एंड डिसाइड कि क्या ये सही है एंड क्या इसको कैसे बदलना है, एंड ब्लॉकचेन कैसे इसको बदल रहा है, ब्लॉकचेन कैसे इसको बदल पाएगा. एनोनिमिटी की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट समवन हु डजंट यू नो, समवन हु डजंट need to have a name, doesn't need to be tracked, doesn't need to be reachable. हम ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं, एंड इसीलिए हमें बात कर रहे हैं कि जब बिटकॉइन या ब्लॉकचेन शुरू हुआ था, a group of people or some simple 1 person, 2 person, it was anonymous. It was Satoshi Nakamoto was completely anonymous. He didn't think about कि मुझे क्या मिलेगा या क्या होगा, and that's why. और अगर मिल भी जाते तो शायद उसको लोग पकड़ लेते, you know. So anonymity is very important, and your anonymity, your online is very important. आप कुछ भी जो ऑनलाइन कर रहे हैं, आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स हर जगह छूटे जा रहे हैं, और वो शायद आप ना रिकॉर्ड कर पाएं क्योंकि आपको नहीं पता कि आप हर सेकंड क्या करते हैं, बट जहां पे रिकॉर्ड होना है वहां सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं और आप उसको बचा सकते हैं अगर आप वो स्टेप्स फॉलो करें. सो वी विल जस्ट यू नो, रादर देन मी टेलिंग यू, एंड वी विल गिव यू अ स्टेप बाय स्टेप थिंग ऑफ व्हाट यू कैन डू, एंड इट्स राइट हियर इन द वीडियो लिंक, and you can follow that step by step process, and you can at least be a little more private, little more less anonymous starting mein, and then be more anonymous dheere dheere, but at least you will be better than you know right now. So I hope you had you know a great time, not a great time, but no one likes to hear this. किसको अच्छा लगता है कि हमें ट्रैक किया जा रहा है, but हमें किया जा रहा है. एंड अगर हम लोग रेडी हैं तो हम लोग राइट स्टेप्स ले सकते हैं, एंड वी कैन हेल्प आवरसेल्व्स एंड हेल्प आवर फ्रेंड्स एंड हेल्प आवर फैमिलीज टू मेक अ बेटर चॉइस एंड टू से नो टू दोज टर्म्स एंड कंडीशंस अनलेस दे गो बैक, यू नो. That's what I wanted to say today. This couldn't have been possible without the support of WazirX and FTX and you know all of your love, and we wish to keep bringing you more episodes. The next is B, and B we always know is B for blockchain. So stay tuned for the next episode. See you then.